representation of motion. Motion, we know that if any body changes its position with respect to the time, then that is motion. Okay, that quite easy to say that suppose you have seen two boys racing. Okay, you can see ye jeet gaya, wo haar gaya, you can say that easily. But when you have to represent that in a pictorial way, एक पिक्चर के जरिए अगर आपको वो बताना होगा तो वो आपके लिए थोड़ा सा क्वाइट डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसी डिफिकल्टी को थोड़ा इजी करने की कोशिश करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट व्हाट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. दैट व्हाट आई हैव सेड that when we are representing that very motion which has occurred in a pictorial form, that is what graphical representation of motion. Okay, so first the definition of a graph. Okay, so what is needed to make a graph? Okay, in this standard 9 we are going to study all the things related to the motion in a straight line only, in means the x axis and the y axis only. If you can see this board is in the form of x axis and the y axis. It doesn't have any z axis, right? Because this is x axis, this is y axis, and this is what z axis. Always the y axis and the z axis should be perpendicular to each other. It should be perpendicular to each other. Okay, so this is what x axis and this is what y axis. So what we are going to study into this is we have to represent the motion in the pictorial form in the x axis and the y axis. Actually this system is known as what? Cartesian coordinate. It has been made by the Cartesians, that's why its name is what? Cartesian coordinate. It's not the only, it can be like this also, it can be like this. It is in the fourth frame. Okay, but that we don't have to study now. Only we are going to study the x axis and the y axis. Okay, so let's start that how to find out that the graphical representation of motion. First of all, that what we are doing via graph. Via graph we are representing two different physical quantities which are competing. Likewise, suppose a hair is moving or racing or running, then it is running, it is changing its position with respect to the time. Okay, so when it is changing its position with respect to the time, we have got two different quantities. Running means traveling a path, actual path. Okay, so when it is traveling an actual path, it means it must have any distance or displacement. So whenever that distance has occurred, it has consumed some time, it has gone through some time. It should be in seconds or in minutes. Okay, so you will get two different quantities, distance and time. Or when we talk about the displacement, you will get the displacement and the time. So here we have two different quantities. One is distance and the time, or the displacement and the time. Okay, so when we talk about the distance, then distance is a dependent quantity because it depends upon the time. Okay, and when we talk about the time, it is an independent quantity. Time किसी भी चीज पे depend नहीं करती. Okay, it is an independent quantity. But distance, displacement, speed, velocity, all these are what? Acceleration, it may be. All these are what? Dependent quantities. So let me clear you one thing, that the independent quantity should always be written in the axis and the dependent quantity should always be written in the y axis. Dependent quantity. And here you write the independent quantity which doesn't depend upon any quantities. Okay, time that should be measured in second. If I am talking about dependent quantity, suppose say distance we are talking about, then it should be meter. Is that clear? And via this you will get a slope, and that slope will tell you that the ratio of the two different physical quantities changes. It is the ratio of the change in the physical quantity by the change in the physical quantity. Okay.
say that this is what t, say that this is what meter, x. Okay, then the slope is represented by change. This delta means what? Change. So delta x, because there will be change in its distance with the distance with the change in time. So that what slope is same. But the question arises, why the slope is normally it's like this? Why the graph is not like this? Then I must tell you that graph may be like this also, may be like this also. The graph may be like this also, the graph may be like this also. So in this section of video we are going to talk about all those types of slopes that is being formed between the two dependent and the independent quantities. So let's do it. I would like to give an example. Suppose you have seen one rabbit along with a snail competing in a race. Okay. Suppose here is a snail. It's a snail which is competing with rabbit. Pardon my diagram. Okay. It has started the race in so it should be in this form. Suppose this is the finishing line. This is what? The finishing line. And this is what? The reference point, the origin or the starting point, you can say. This is 10 meter, this is 20 meter, this is 30 meter, this is 40 meter, and this is what? 50 meter. So the race is of only 50 meter. And these are the time duration. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So let's talk about the race. Any guesses who will win? No doubt, rabbit is going to win. Okay. So how they have win? Let's check out what they did. Let's talk about the snail. The snail has moved 10 meter in 2 seconds. Let's say that only. 20 meter in 3 seconds. 40 meter, 30 meter in 3 seconds. 40 meter in 5 seconds, and 50 meter in 6 seconds. Okay, it has done that. So what you have to do over here? Again, at an instant when you will see the snail at that moment of time, you will see that at 1 second the snail is there. After that, you will see that in the second of the second the snail is here, isn't it? And in the third of second it will reach the 30 meter. Okay, that's an imagination only. So what you will get, you will be able to see that if I change this to this, if I change this 1, 2, 3, 4, 5, and this would be second, and these are 10, 20, 30, 40, 50, 60. You will be able to see in the second it has reached this mark. Okay, and in third second it has reached this mark, and in the fourth second it has reached this mark. और इन सारे मार्क को आप क्या करेंगे? सिल देंगे. जो आपने देखा है परसेप्शंस ऑफ विजन के थ्रू आपने देखा कि वो 1 सेकंड पे यहाँ था, फिर वो 2 सेकंड पे यहाँ था, 3 सेकंड पे यहाँ पे, 4 सेकंड पे यहाँ पे. तो आपको एक, अगर उन सबको सिलेंगे तो एक आपको एक डॉटेड लाइन नहीं दिखेगा इस तरीके से. You'll be able to see a dotted line, और उन dotted line को बहुत ज़्यादा क्लोज लेकर आएंगे तो आपको नहीं लगेगा कि ये सब एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ रहेगा. You will get a slope. तो वो उसका क्या बता रहा है? It shows its position with respect to the time. So we are going to talk about the position time relation. Position time. उसी वक्त में अगर हम हॉर्स
रैबिट का चेक करेंगे तो उसका ग्राफ कुछ स्टीपर इस तरीके से रहेगा, मतलब वो अपना रेस जो कि 50 मीटर का माप था वो सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है। वो सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में कंप्लीट कर लेता है। Isn't it? You can see in different way। आप इसको डिफरेंट वे से देखेंगे कि ये अपना ये पॉइंट इस तरीके से और आपको ग्राफ कुछ इस तरीके से दिख रहा है। You are able to see the graph in this form। आपको इस तरीके से ग्राफ दिख रहा है। Isn't it? इसको समझने का बहुत सारा पहलू है। पहले इस पहलू को देखें कि मान लेते हैं कि ये एक हिल टॉप है, दिस इज अ हिल टॉप और ये 50 मीटर तक पहुंचने में 6 सेकंड्स लगाता है और ये 50 मीटर के टॉप तक मतलब फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने में कितना टाइम लगाता है? 2 सेकंड का वक्त लगाता है। यू विल सी दैट वो व्हेन वी टॉक अबाउट द स्नेल की अगर बात करते हैं तो इट टेक्स इसकी वेलोसिटी इसकी स्पीड के बारे में बात करते हैं तो वो 50 मीटर दूरी तय करता है 2 सेकंड्स में, isn't it? 50 मीटर in 2 seconds और ये रैबिट स्नेल ये रैबिट और ये स्नेल क्या करता है तो 50 मीटर का माप कब कंप्लीट करता है? मानते हैं 5 सेकंड तो वो कितना है 1 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चलता है और ये यू विल गेट अराउंड और ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये क्या चल रहा है 25 मीटर पर सेकंड। ये तो कैलकुलेशन का जरिए आप लोगों ने पता कर लिया। एक चीज और पता कर लिया आप लोगों ने, जरा देखिए इसके ऐसा यूनिट पे ध्यान दें। इसका यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। तो हमारा पोजीशन टाइम रिलेशन क्या दे रहा है? पोजीशन टाइम रिलेशन हमारा क्या देता है? इट गिव्स व्हाट? वेलोसिटी। इसे दिमाग में रखेंगे दैट द पोजीशन टाइम ग्राफ विल गिव यू व्हाट? द वेलोसिटी। ओके, इसको एक और पहलू से हम लोग देखते हैं दैट ये अगर एक पहाड़ है तो इसको कॉन्स्टेंटली एक ही स्पीड से मूव करते हुए जा रहा है, इट नेवर चेंज। लाइकवाइज आप यहाँ पे देखेंगे अगर इसको थोड़ा सा हम इंक्रीज करते हैं डायग्राम साइज में थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अदरवाइज मान लेते हैं 1 सेकंड में यहाँ पे है, दूसरे सेकंड पे यहाँ पे, तीसरे सेकंड पे यहाँ, चौथे सेकंड पे यहाँ, पांचवें सेकंड पे यहाँ, इधर इसको मैच करेंगे, इसको मैच करेंगे। ये मान लेते हैं ये 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर का माप है और ये 40 मीटर का माप है, ये 50 मीटर का माप है। तो वो हर सेकंड 10 मीटर मूव कर रहा है। यहाँ पे 10, यहाँ पे भी 10 आप चेक कर सकते हैं। 20/2 यू विल गेट 10 मीटर पर सेकंड, यू विल गेट 30/3 10 मीटर पर सेकंड, 40/4 10 मीटर पर सेकंड, 50/5 यू विल गेट व्हाट 10 मीटर पर सेकंड। सो व्हाट यू आर एबल टू सी कि उसका वेलोसिटी हर जगह क्या है? वो 10 मीटर पर सेकंड ही है। सो इसके वेलोसिटी को जो कि पोजीशन टाइम रिलेशन से मिला है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज हैविंग व्हाट? कांस्टेंट वेलोसिटी। इट इज हैविंग व्हाट? कांस्टेंट वेलोसिटी। ये दिमाग बनाएगा कि कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ क्या रहेगा? स्ट्रेट ग्राफ आपको शो करेगा, ठीक है। तो क्या ये कांस्टेंट नहीं है ये वाला? तो ये आंसर मस्ट बी नो। क्यों? बिकॉज वो पहला यहाँ था, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तो वो 2 सेकंड पे ही वो 50 मीटर मार्क ट्रैवल कर जाता है, isn't it? तो ये जो वेलोसिटी है वो क्या है? इट इज नॉन कांस्टेंट, इट इज व्हाट? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या है? इसको आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकते हैं। ओके, इसको एक और तरीके से देखते हैं कि अगर ये पहाड़ है तो यहाँ पे पहाड़ को आप कंटिन्यूअसली एक ही स्पीड से चलने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे आपको ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करना पड़ रहा है। तीसरा एक और पहलू से देखते हैं कि अगर यहाँ से टाइम एक्सिस के कंपेयर में इसको देखेंगे तो ये एंगल मान लेते हैं 60 डिग्री है, तो ये एंगल यहाँ से ये कितना है? इट इज मोर देन दैट, अराउंड 75 डिग्री। तो जिसका जितना ज्यादा स्लोप रहेगा उसका वेलोसिटी उतना ज्यादा रहेगा।
अब समझ में आया कि ग्राफ के जरिए आप कितनी आसानी से बता सकते हैं कि कौन जीता कौन हारा। Isn't it? So that was, so better pause